Hello friends, a very good evening to all of you. Hello everyone. I hope I'm clearly visible and audible to every one of you. And let me check if I am live with this session. All right. Yes. So here I can see myself live. Good evening everyone. Good evening all of you. Now, all the students who are watching this class, come on, give me a thumbs up that you all can hear me clearly and you all can see me properly. Everyone, a very good evening. Aditya, Ravisha, Iti, Tanmay, Vansh. I can see all of your names. Hello, everyone. A very good evening to all of you and welcome once again on your favorite application, IPMAT Wallah. So, friends, a class not yet started, or it is my glitch. Once the class has started, एक बार refresh कर लो if you can hear me. जल्दी से एक बार refresh कर लो. Guys, कोई भी glitch होता है ना तो वो technical error है. तो अपनी window को refresh करो and you will be able to see the live reception of the class immediately. Right? So come on, give me a yes. All of you give me a yes if I'm clearly visible and audible to every one of you. Parv, I can see your name. Parv, सिर्फ एक ही बार लिखो. Please try not to spam the chat box. All right. So people, all of you can see me live. A very good evening to all of you. And these are the classes that we are having for the preparation of IPMAT examination. Right now, I'll just quickly tell you a few words about your preparation and about the inclusion of logical reasoning and data interpretation, the importance of logical reasoning and data interpretation in the examination that we'll be writing, right? Now, first of all, I'll be starting with JIPMAT examination, जो सबसे पहले है 26th of April, date out हो चुकी है. आई एम श्योर दैट सबने इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भी फिल कर दिया होगा. तो जिपमैट एग्जामिनेशन, सो इन जिपमैट एग्जामिनेशन यू विल सी अ सेपरेट सेक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. Right now, this section of logical reasoning will have almost all the questions from the areas that we'll be covering in our classes. Right now, next is IPMAT in the IPMAT Rohtak examination. तो IPMAT Rohtak में भी logical reasoning का एक अलग से section होता है. Right now, if I talk about data interpretation, yes, you may find some questions on data interpretation as well in these examination. Now, talking about IPMAT Indore examination, तो IPMAT इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का अलग से कोई सेक्शन नहीं होता. बट ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स, अगर लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर्स उठा के देखोगे तो क्वांट का जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन होता है उसमें हर बार लाइक एवरी ईयर यू विल सी one set of 5 questions coming either from logical reasoning or from data interpretation, right? So 5 set question, right? So एक सेट ऐसा है जिसमें 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं. लॉजिकल रीजनिंग का अगर सेट है एंड आप सेट को डिकोड कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो ये 5 मार्क्स क्विकली आप गेन कर सकते हो. 5 क्वेश्चंस क्विकली गेन कर सकते हो. एंड इन एन एग्जामिनेशन लाइक IPMAT इंदौर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इंदौर में, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, 5 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. राइट, सो गाइज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट, बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे यार. फिजिक्स इजी था, फिजिक्स डिफिकल्ट था, मैथ्स इजी था, ये अब सब हो चुका है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ द पास्ट. ओके, नाउ देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है. नो प्रॉब्लम एट ऑल, फर्स्ट क्लास है, ऑब्वियसली आज से एक नया बैच शुरू हुआ है. Okay, and we will be covering each and everything in the upcoming classes for all of you as far as logical reasoning and data interpretation is concerned, also as far as the other sections are concerned. Right, so my dear friends, the topic for the day is Venn diagrams. But before we come on this, I have 2 important announcements for all of you. 2 important announcements. Right now, one thing is
we are going to start a new series on YouTube channel. तो guys, जिसको पता नहीं है मैं बता देता हूं, हमारा एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है IPMAT IPMAT Wallah. So this is our YouTube channel, YT channel, YouTube channel. So those who are not the subscribers of this channel, so go ahead, YouTube open करना इस क्लास के बाद and ये channel को subscribe कर लेना, right? Now why you need to subscribe this channel? Because on our YouTube channel we keep on delivering some of the free sessions in which we cover some basic concepts of different topics with some additional questions. So जिन students who are already a part of IPMAT वाला, जिसने already batch purchase कर लिया है, okay, so watching these sessions will help you an added advantage. Okay, तो इन सेशंस में जो ये YouTube के सेशंस होंगे, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर अप करते हैं of different topics, right? So from tomorrow onwards we are starting a new series which is called IPMAT One Shot. Okay, इसके बारे में आप सबको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा. So we are going to start this new series IPMAT One Shot. Okay, so One Shot series start हो रही है and इसके days जो होंगे, it will be Tuesday, Thursdays and Saturdays. So till your IPMAT examinations, will be running this series. So every week will be coming 3 times. Okay, so Juhi ma'am, Vineet sir and me. So Juhi ma'am will be taking on verbal RC. Vineet sir will be teaching you mathematics, quantitative aptitude, and I'll be teaching you logical reasoning and data interpretation. Okay, so 3 of us will be coming once a week, Tuesday, Thursday and Saturday, right? And will be helping you out with some of the topics and some extra questions which are based on these topics, right? So make sure that you are a part of this new series which will be there on our YouTube channel IPMAT Wallah. All right, fine. So this is one announcement, and the second announcement, thoda sa color yahan pe, batch mock live. Okay, so these are some of the mock papers which are already live in your batches. So jo students already who have been studying with us since so long, they can start writing the mock papers. So these are the 5 mock papers of IIM Indore, right? IPMAT Indore, which are already live, and you can start taking these mocks. The students who have started their preparation recently, अभी रुक जाओ, अभी mock देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? So कुछ दिन रुक जाओ and then we will suggest you when you should be starting writing these mock papers. All right, great. राइट, सो आज की क्लास सिर्फ आज की क्लास यूट्यूब पे लाइव है, आगे की क्लासेस लाइव नहीं होंगी यूट्यूब पे. दिस इज लाइक अ स्मॉल डेमो सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who are not yet the part of IPMAT Wallah family. Okay, they can watch this lecture and they can join the batch. So सिर्फ आज की ही क्लास यूट्यूब पे जा रही है, इसके बाद और कोई क्लास यूट्यूब पे नहीं जाएगी as far as the classes of paid batches are concerned. All right, ठीक है, चलिए. So let's begin with today's lecture. तो आज का एजेंडा क्या होगा? We'll be talking about the basics of Venn diagram. Venn diagram होता क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, and what type of practice do we require to solve almost every type of question of Venn diagram. Okay, so we'll first of all be talking about the basics and then we'll be solving plenty of questions which will be based on Venn diagrams. All right, right? So as far as practice is concerned, you will find enough number of questions from Venn diagrams in today's class. And ये चीज आपको भी पता होगी, after every class you can download a DPP, daily practice problems आप download कर सकते हो, and these DPPs will include added questions on the topic which we have covered in the classes. All right, half of us are ex-JEE aspirants. No problem आदित्य, तो ex-JEE aspirants हैं तो क्या हुआ, 2 महीने हैं बस. Yes, I had 93 in JEE, ex-NEET aspirant. All right, no problem. So now friends, all your focus should be on this lecture now, ठीक है? So I'm now going to start with the basics of Venn diagrams. So let's do this thing. Okay, so basics of Venn diagram. Now first of all, how to draw a Venn diagram. Venn diagram कैसे draw करते हैं? So now those of you who know how to draw a Venn diagram,
क्विकली राइट अ यस इन योर चैट बॉक्स। जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर आपको एक वेन डायग्राम बनाना आता है। कम ऑन, क्विकली गो अहेड। ओके, एंड नो भी लिख सकते हो अगर आपको वेन डायग्राम नहीं आता बनाना। सो प्लीज राइट अ नो इन द चैट बॉक्स। आई कैन सी सम ऑफ यू राइटिंग अ नो, सो दैट इज व्हाई आई एम हियर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा वेन डायग्राम क्यों बनाते हैं, वेन डायग्राम होता क्या है, राइट? ठीक है, सो आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट? सो लेट्स से in a class of 100 students, okay, so there are total 100 students, right? Fine. Now out of these 100 students, there are some students, let's say 70 students, who likes studying physics, okay, who likes studying physics. So 100 students में से 70 students ऐसे हैं जिनको physics पढ़ना पसंद है, right? And out of these 100 students, there are 60 students who likes studying mathematics. All right. Now, if I look at this set of 70 students and this set of 60 students, so 70 और 60 का sum कितना होता है? The sum is 130, right? 130 is the sum of these two numbers. Okay. So, is it possible that out of 100 students, just write yes or no? क्या ये possible है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 70 को फिजिक्स पसंद है एंड 60 को मैथमेटिक्स पसंद है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस और नो? ऑलराइट, पीपल आर राइटिंग नो। ओके, ऑलराइट, नाउ द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग नो, अब एक चीज दिमाग लगा के सोचो, ध्यान से सोचो, क्या ये जरूरी है कि ये जो फिजिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं ये डिफरेंट हो? ये जरूरी नहीं है। ओके, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों पसंद हो सकता है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको ओनली फिजिक्स पसंद है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको ओनली मैथ्स पसंद है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों ही पसंद नहीं है, राइट? ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, सो देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर लाइन फ्रॉम दीज 100 स्टूडेंट्स। ओके, मुझे इतना पता है कि 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फिजिक्स पसंद है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली फिजिक्स पसंद है एंड मैथ्स पसंद नहीं है, या फिर मैंने ऐसा नहीं बोला कि 60 स्टूडेंट्स आर देयर जिनको ओनली मैथ्स पसंद है, फिजिक्स पसंद नहीं है। ओके, सो लिसन टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू वेरी केयरफुली, रीड दैट इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। सो आई हैव मेंशन्ड दैट out of 100 students, 70 students likes physics and 60 students likes mathematics, right? So please write yes or no. Can there be a possibility? क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों ही पसंद है? yes or no? पॉसिबल है ये? come on, write your answer. पॉसिबल है या फिर नहीं ये चीज? come on, all of you, I want to hear it from every one of you. The students who are watching me on YouTube, come on guys, don't be behind the other students. Possible है ना? ठीक है। अब इस टाइप की सिचुएशन को लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, मैथमेटिकली अभी हम बात नहीं करेंगे, राइट? सो वेन डायग्राम पे जो मैथमेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे एग्जाम में अभी तक नहीं आते हैं, right? So you will not see those type of questions which will involve calculations in Venn diagrams. बहुत heavy calculations, Venn diagrams, set theory वाले questions अभी इन वाले examinations में नहीं आते हैं, right? So we'll just be having a look at logical representation of a Venn diagram, right? Now let's have a look at logical representation. तो सबसे पहले I'll represent this क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ओके, सो मैं एक रेक्टेंगुलर, इन जनरल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे। ओके, आप अब रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बना सकते हो, यहां पे सर्कल बना सकते हो। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। डन? तो मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जो पूरा का पूरा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, वो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, नाउ आई विल नॉट बी राइटिंग नंबर्स क्योंकि मैथमेटिक्स का खेल अभी नहीं है। ओके, अब इन स्टूडेंट्स में से, ये 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स। अब इन स्टूडेंट्स में से देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स पसंद है, ठीक है, तो मैं एक सर्कल बना दूंगा। ओके, नाउ दिस सर्कल विल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु लाइक्स फिजिक्स। ओके, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु लाइक्स फिजिक्स। डन। अब एक और सर्कल बनाना है स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथमेटिक्स, राइट। अब ये जो दूसरा सर्कल है ये अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो आई कैन ड्रॉ दिस सेकंड सर्कल इन मल्टीपल वेज। सो द स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथमेटिक्स, इट कैन बी लाइक दिस। ओके, तो ये इस टाइप से सर्कल्स कब बनेंगे? व्हेन देयर इज नो स्टूडेंट हु इज कॉमन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने फिजिक्स का सर्कल ये बनाया है एंड मैथमेटिक्स का सर्कल मैंने यहां पे अलग से बना दिया। ओके, तो इस टाइप का वेन डायग्राम कब बनेगा? जब स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स एंड स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स, इनमें कोई भी स्टूडेंट कॉमन नहीं होगा, देन वी विल बी ड्रॉइंग दिस टाइप ऑफ वेन डायग्राम। ऑलराइट, ठीक है ना? हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट कॉमन नहीं है। डन। नेक्स्ट लेट्स लुक एट अनदर टाइप ऑफ वेन डायग्राम। ओके, नाउ मैथमेटिक्स का सर्कल, सो एक मैं एग्जांपल दे चुका हूं। नाउ सेकंड एग्जांपल। नाउ इट विल बी बेटर इफ ऑल ऑफ यू विल नोट डाउन दीस टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स इन योर नोटबुक। नोटबुक में अगर नोट कर लोगे, आपके सामने रेफरेंस होगा, तो आप बहुत इजीली कंपेयर कर पाओगे। तो मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूं व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक्स ऑफ वेन डायग्राम। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो। सो मैथमेटिक्स का सर्कल, फर्स्ट एग्जांपल, मैथमेटिक्स सर्कल कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के सर्कल अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये कब बना सकते हैं? व्हेन नथिंग इज कॉमन बिटवीन स्टूडेंट्स हु लाइक्स फिजिक्स एंड स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स। ओके, अलग अलग हैं ये स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ऑलराइट, चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। The circle of mathematics can lie completely inside the circle of physics. अब इसका मतलब क्या है? Can you all tell me the meaning of this thing? Circle of mathematics is lying completely inside the circle of physics. Come on, go ahead and guess it. Guess करो जल्दी से, डरो मत, आज नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्लास के अंदर। ओके, सो वी डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग इन द क्लास, सो जस्ट गो अहेड एंड गेस कि इस चीज का मतलब क्या है। ऑल मैथ्स स्टूडेंट्स लाइक फिजिक्स। पृथ्वीराज, नंबर्स को भूल जाते हैं हम, ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दीज नंबर्स फ्रॉम हियर नाउ। ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट नंबर्स, लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक हियर। डन, ठीक है, सो ऑल मैथ्स स्टूडेंट लाइक फिजिक्स, गुड, ऑल मैथ्स लाइक फिजिक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। Now every student who like mathematics also likes physics, ठीक है ना? तो जितने भी मैथ्स को पसंद करते हैं वो फिजिक्स को भी पसंद करते हैं, ठीक है? So every student who likes mathematics will like physics. Am I clear? In this case, can I say that every student who likes physics also likes mathematics? Yes or no? Every student who likes physics also likes mathematics, yes or no? Absolutely, we cannot say that because कुछ ऐसे students हैं जो let's say यहां पे lie कर रहे हैं, इधर outside the circle of maths and inside the circle of physics, कुछ ऐसे students हैं जिनको only physics पसंद है, right? So जो second statement मैंने बोली, that will not be a correct statement to make. So I can say that the students who likes maths also likes physics, right? Clear? Now people, ये जो हम आज सीख रहे हैं ना Venn diagrams will help you in one another topic from which you will see at least 2 to 3 questions in your logical reasoning section, right? The name of the topic is syllogisms. ओके, सो सिलॉजिज्म्स को समझने के लिए अगर ये आज वेन डायग्राम समझ में आ जाता है ना, तो आपको सिलॉजिज्म्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अंडर कंट्रोल हो जाएंगे, राइट? सो वेन डायग्राम हैज अ डायरेक्ट यूसेज इन द क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम्स एज वेल एज इनडायरेक्ट यूसेज इन द क्वेश्चंस ऑफ सिलॉजिज्म्स, बिकॉज सिलॉजिज्म्स जो हम पढ़ते हैं ना, सिलॉजिज्म्स के क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं
So all those questions can be solved using the concept of Venn diagrams. I'll be teaching you that. Do not worry at all. Okay. Now I'm going to draw a third type of diagram for mathematics. Third type. Okay, so this white circle is of mathematics. So now I can say that all the students who likes physics also likes mathematics, right? So the circle of physics is lying completely inside the circle of mathematics. So everyone who likes physics also likes mathematics, but the converse, the reverse, the vice versa is not true. ठीक है ना? इसका vice versa true नहीं है. All right, clear है? So ये third example हो गया. Now let's look at the fourth example. Now the fourth example is like this. Now this is a very common type of Venn diagram. बहुत common है ये चीज. Okay. Now there are some students who likes physics. There are some students who likes mathematics, right? Now this entire region is divided in different parts. So let's talk about each and every region separately. एक एक करके regions को check करते हैं. Now first of all, I'm looking at this region that I have highlighted. ये जो पहला region मैंने highlight किया है, this is, let's call it region number 1. Now what does this region represents? Giving you 30 seconds, फटाफट से लिख दो, what does this region represents? अब इस Venn diagram का मीनिंग नहीं देख रहे, अब यहाँ पे क्लियर है, there are some people who may like both, so partially overlap कर रहे हैं circles, okay, right? अब ये region क्या represent करता है? This region not in the form of set theory की language में हम नहीं देख रहे. Now this region represents the students who likes both the subjects, okay, both physics and mathematics. So I'm writing here region number 1, the students who likes both physics and maths. Okay, both, this word is important. Okay, I call it region number 1. Done? Region number 1. Now let's talk about region number 2, the region that I am highlighting now. Now this region comes inside physics, but it does not include this common portion. Okay, so this region number 2 represents the students who likes only physics, right? So this region number 2 is the students who likes only physics. Done? Okay, let's erase this and I'll write 2 here. Okay, now let's talk about the next region, that is region number 3. Okay, now region number 3, all of you can write it quickly, I'm waiting for you. So region number 3 क्या होगा? Yes, region number 3, absolutely, who likes maths only. So only maths. Done? Okay, so let's write region number 3 here. And एक और region है, बहुत important region है. So region number 4, outside, जो physics के circle में भी नहीं है, maths के circle में भी नहीं है, that is region number 4. So region number 4 are the students who like none of physics and maths. Okay, जिसको physics भी पसंद नहीं है, maths भी पसंद नहीं है. So these are neither physics nor mathematics. You can write it like neither physics nor mathematics. This is the region. All right, fine. So these regions are very important. Recognizing these regions is very important. Okay, right? So now you have region number 1, region number 2, region number 3, and region number 4. Okay, clear? I'll again repeat. Region number 1, both physics and maths. Region number 2, only physics. This word is important. Only. Okay, so both and only, ये words बहुत important हैं. Done? So region number 2 and region number 3 respectively are for only physics, only mathematics. Region number 4, बाहर वाला region, neither physics nor mathematics. Right? ठीक है? Okay. So now if I'll ask you, out of these regions, listen to the question carefully. Huh?
आउट ऑफ दीज 4 रीजन्स, रीजन नंबर 1 2 3 4, 4 रीजन्स हैं आपके सामने. आउट ऑफ दीज 4 रीजन्स, which region or which regions represent the students who likes physics? Come on, very carefully, the students who likes physics. एंड ना ये चीज नोट करते रहो, प्लीज कीप नोटिंग इट डाउन. मैंने क्या पूछा है? द स्टूडेंट्स हु लाइक्स फिजिक्स. ये कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? सो द स्टूडेंट्स हु लाइक्स फिजिक्स, विच रीजन और रीजन्स? एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. सो फिजिक्स वाला कौन सा रीजन है? दिस इज द कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल. Okay, now this complete circle of physics, it includes region number 2 as well as region number 1. So region number 1 and region number 2 is physics. Similarly, maths will be represented by, yes, all of you can write it. So students who likes mathematics, region number 1 and region number 3. All right, so region number 1 and region number 3, this region or this is represented by students who likes mathematics, right? So please be careful with the word only. यहां पे only नहीं बोला था मैंने. तो अगर मैं बोलता हूं only physics will be region number 2 and physics will be region number 1 and region number 2 together. Okay, clear? चलो और चीजें पूछता हूं मैं. The students who likes exactly 2 subjects, the students who likes exactly 2 subjects, इन 4 रीजन्स में से कौन सा रीजन या कौन से रीजन्स exactly 2 subjects रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, exactly 2 subjects. So exactly 2 subjects मतलब 2 subjects होने चाहिए. So 2 subjects यहां पे ओवरलैप जहां पे कर रहे हैं. 1 रीजन नंबर 1, exactly 2 subjects. Okay, next, exactly 1 subject. Which region or regions represents exactly 1 subject? Exactly 1 subject. जल्दी से लिख दो. जो YouTube पे देख रहे हैं शर्माओ मत यार, आंसर गलत भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? सीखने को मिलेगा कुछ भी. And the students who are watching on the app, come on, I want an answer from every one of you. And एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपना आंसर सिर्फ एक बार लिखो. चैट बॉक्स को स्पैम नहीं करना है, सिर्फ एक बार आंसर लिखो, दैट्स इट. ठीक है? ओके, सो exactly 1 मींस या तो ओनली फिजिक्स या फिर ओनली मैथमेटिक्स. ओनली फिजिक्स इज रीजन नंबर 2, ओनली मैथमेटिक्स इज रीजन नंबर 3. सो रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3, राइट? एग्जैक्टली 0 सब्जेक्ट, ऑब्वियसली रीजन नंबर 4. ऑलराइट, ठीक है? अब और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? लिसन केयरफुली नाउ. एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट. At least 1 subject. Which region or regions? Harshita, Garv, Kirti, check your answer. Vanshika, Bhumi, Dimple, Daksh, Sparsh, absolutely, go ahead. Okay, so at least 1 subject का मतलब क्या है? हिंदी में कन्वर्ट करते हैं. चलो, at least का मतलब होता है कम से कम. ओके, कम से कम एक सब्जेक्ट, राइट? सो मिनिमम 1 सब्जेक्ट, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. तो यहां पे मिनिमम 1 सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट. तो 1 सब्जेक्ट वाले कौन कौन से हैं? यहां पे 1 सब्जेक्ट वाले कौन से हैं? रीजन नंबर 2 एंड 3. एंड 2 सब्जेक्ट वाले कौन से हैं? रीजन नंबर 1. So all these 3 regions, region number 1, region number 2, region number 3 will be included. कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना? कम से कम एक सब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट. एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट. कम ऑन, राइट द आंसर. अब ये गलती कर रहे हो ना. एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब एक या एक से कम.
तो 1 सब्जेक्ट या फिर 0 सब्जेक्ट्स। ओके, 1 सब्जेक्ट्स या फिर 0 सब्जेक्ट्स। हम ये गलती कर देते हैं, हम ये 0 सब्जेक्ट्स वाला है ना, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको नहीं भूलना है। तो 1 सब्जेक्ट मतलब रीजन नंबर 2 और 3 तो होंगे ही होंगे, रीजन नंबर 4 को भी इंक्लूड करना है। राइट, सो एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब एक या एक से कम सब्जेक्ट। ओके, सो 2, 3 and 4, all these 3 regions should be included. Okay, so काफी लोगों ने 2 और 3 दिया आंसर, 4 रीजन नंबर 4 को भूल गए, बट रीजन नंबर 4 का खास ध्यान रखना है। ठीक है, सो गाइज मैं क्या करता हूं और मैं क्या करता था जब मैं आपकी सिचुएशन में हुआ करता था, सो आई यूज्ड टू मेक वेरी स्मॉल नोट्स ऑफ द थिंग्स वेयर आई एम कमिटिंग मिस्टेक्स। तो मैंने यहां पे एक मिस्टेक किया ना, आप लोगों ने मिस्टेक किया, सिर्फ 2 और 3 रखा, आप 4 को भूल गए। ठीक है, तो मेक अ नोट, कहीं पे भी ना एक अलग से नोटबुक बना लो, ज्यादा मोटी नहीं होगी वो नोटबुक, 10-15 पेजेस होंगे, तो वहां पे लिखते रहो कि द मिस्टेक्स दैट आई एम कमिटिंग। सो अगर आप वो चीज नोट डाउन कर लोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहोगे और आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, सो दिस इज द मंत्रा ऑफ क्रैकिंग दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चीजों के, और किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हम वो देखते हैं। राइट, सो अब 3 एंटिटीज हैं। अब यहां पे तो मैंने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स यूज कर लिए। ओके, नाउ इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन यू मे सी सम मीनिंगफुल थिंग्स लाइक बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन। ओके, अब अगर मैं इन 3 चीजों की बात करता हूं, बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन, सो कोई ऐसी बस है जो ट्रेन हो सकती है? नहीं। कोई ऐसी ट्रेन है जो बस हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा बस एंड ट्रेन का, तो इसमें कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा। ओके, सो इफ दिस इज द सर्कल फॉर बस, दिस विल बी द सर्कल फॉर ट्रेन, बिकॉज बस एंड ट्रेन में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। Are there some buses which are trains? No. Are there some trains which are buses? No. They are mutually exclusive. Okay, अलग अलग हैं दोनों। Then aeroplane, तो कोई ऐसी बस या ट्रेन है जो एरोप्लेन भी होती है? नहीं होती। तो ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं, तो इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, या फिर 3 अलग अलग सर्कल्स, दिस और इन दिस वे। ओके, राइट विजेता? हाँ, चलो सो मैं और एटमोस्ट एक बार फिर से समझा देता हूं, ये रिक्वेस्ट आई है एंड यूट्यूब पे भी काफी लोगों ने बोला है, 1-2 लोगों ने बोला है कि एटमोस्ट का मतलब क्या है। सो एटमोस्ट, ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट इन हिंदी? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो एटमोस्ट क्या करता है, अपर लिमिट पे कैप लगा देता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं बोलता हूं एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 5। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा 5, कम कितने हो सकते हैं? कितने भी, 0 भी हो सकता है। ठीक है, सो आई हैव एटमोस्ट 5 कॉइन्स। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आई हैव एटमोस्ट 5 कॉइन्स, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन नहीं बता रहा, बट मैं आपको बोल रहा हूं आई हैव एटमोस्ट 5 कॉइन्स, तो मतलब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 5 कॉइन्स हैं। 5 या उससे कम कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपसे पूछा था कि एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट, मैंने आपसे पूछा था ना एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट, तो एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? एक सब्जेक्ट या फिर उससे कम 0 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो 1 सब्जेक्ट कितनों को, कौन कौन से रीजन्स को पसंद है? 2 and 3 रीजन नंबर, एंड 0 सब्जेक्ट्स रीजन नंबर 4। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट। ऑलराइट, फाइन। यस लक्ष्य, एटमोस्ट मैक्सिमम पे कैप लगा देता है, तो मैक्सिमम 1 होने चाहिए, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल। सो देर आर एथलीट्स, देर आर स्टूडेंट्स एंड देर आर बॉयज। ओके, अब इस चीज को समझते हैं प्रॉपरली। अब बॉयज का सर्कल अगर मैंने ऐसे बनाया, तो क्या ऐसा जरूरी है लॉजिकली कि एवरी बॉय विल बी एन एथलीट? क्या हर बॉय एथलीट है? भाई मैं भी बॉय हूं बट मैं एथलीट नहीं हूं, फाइन, ठीक है ना। सो एवरी बॉय विल नॉट बी एथलीट,
नाउ बिटवीन द एथलीट एंड बॉयज रिलेशन क्या होगा, कुछ बॉयज एथलीट हो सकते हैं, ठीक है, डन. So some boys can be athletes. So if I draw the circle for athlete like this, will it be appropriate? क्या ये appropriate होगा? Some boys, कुछ ऐसे boys हैं जो एथलीट हैं, क्या ये डायग्राम appropriate है? नो, नहीं, ये appropriate नहीं है, because every athlete क्या जरूरी है बॉय होगा? क्या हर एक एथलीट बॉय होगा? अब यहां पे इस वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि हाँ भाई कुछ बॉयज में से एथलीट्स हैं, बट हर एक एथलीट बॉय है, तो ये भी गलत है, बिकॉज देयर मे बी सम एथलीट्स हु आर नॉट बॉयज, गर्ल्स भी हो सकती हैं, राइट? ठीक है, सो दैट्स व्हाई एथलीट का सर्कल आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, and they will be partially overlapping each other, right? तो some boys can be athletes और some athletes can be boys, तो ये partially overlap कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कुछ boys ऐसे हो सकते हैं जो एथलीट नहीं है, और कुछ एथलीट ऐसे हो सकते हैं जो boys नहीं है, फाइन, तो ये पॉसिबल है. सो दिस इज द appropriate Venn diagram, राइट? ठीक है. नाउ इफ आई लुक एट द थर्ड सर्कल, स्टूडेंट, तो लॉजिकली बताओ क्या हर स्टूडेंट बॉय होगा? नहीं. क्या हर बॉय स्टूडेंट होगा? नहीं. सिमिलरली क्या हर स्टूडेंट एथलीट होगा या हर एथलीट स्टूडेंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो यहां पे भी ये आपस में पार्शली ओवरलैप करेंगे, राइट? एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ड्रॉइंग दिस वेन डायग्राम. ऑलराइट, so I'll stop here for a few seconds before we'll go to the questions. If you have any doubt related to the concepts that I have explained up till now, जो भी मैंने अभी तक explain किया उसमें कोई भी doubt हो फटाफट से पूछो, otherwise we'll start looking at the questions. Prithviraj, see, like I think some students are debating over a fact कि मैं एटमोस्ट का मीनिंग समझाने के लिए पीछे क्यों चला गया. we should not be waiting for the students who don't understand the meaning of एटमोस्ट. so दोस्त ऐसा होता है, देख एटमोस्ट का मीनिंग पता होता है, बट कंटेक्सचुअल यूसेज, क्वेश्चन में जो यूसेज है ना, कभी कभी वो चीज समझ में नहीं आती, ठीक है? ऐसा हो सकता है ना लेटर ऑन आपको कोई एक चीज समझ में ना आए, एंड इफ आई रिफ्यूज टू गो बैक टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट अगेन, ठीक है, तो लीव थिंग्स ऑन मी, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे पीछे जाना है या फिर नहीं, ठीक है ना? आई विल मेक श्योर कि आज का जो एजेंडा है जो मैंने डिसाइड किया वो खत्म होगा 2 आवर्स के अंडर अंडर, ठीक है? पहले भी खत्म हो सकता है, बट विद इन 2 आवर्स वो कंप्लीट एजेंडा मैं डिस्कस करूंगा. एजेंडा इज टू हेल्प ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट्स को मैं सेटिस्फाई ना ही कर पाऊं अगर, बट आई विल बी सेटिस्फाइंग, आई विल बी एबल टू हेल्प यू, आई विल ट्राई टू हेल्प मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? राइट, चलो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अब. ओके, परफेक्ट. चलिए, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. सो यहां पे और भी एग्जांपल्स हैं, तो आपको मिल जाएंगे अपनी जो पीपीटी डाउनलोड करोगे. So let's have a look at question. Okay. Now choose the Venn diagrams from the given options which best represents the relationship between the following classes. So there are 3 classes which are given: fishes, sharks, and dolphins. Okay. So option A, B, C, D, 4 options are there. Please write your answer in the chat box, whichever you feel like is the most appropriate answer. Go ahead. अब अक्षय, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अब है फ्रॉम दिस टॉपिक, टू क्वेश्चंस तो आ सकते हैं आराम से, एंड समटाइम्स यू मे फाइंड अ सेट ऑफ 3 और 4 क्वेश्चंस व्हिच यू विल सी लेटर इन टुडेस क्लास. ठीक है, किस टाइप से आते हैं? ऑलराइट, now choose the Venn diagram from the given options which best represents the relationship between this. Okay, now you may use 2 different ways of approaching towards these questions. 4 options are given,
you may start eliminating the options. Okay, but the most appropriate way will be, ये जो words हैं इनके meanings understand करो and try to draw a class for all of them. ठीक है, and then try to match the Venn diagram that you have drawn with the Venn diagrams that are given in the options. Okay, so go for your understanding for these words. Okay, now sharks are fishes, yes, and dolphins are also fishes, right? Is there any shark who is not fish? Is there any dolphin which is not fish? नहीं, सारी की सारी dolphins fishes होती हैं, सारी की सारी sharks भी fishes होती हैं. Okay, so there should be a circle of fishes which is a bigger circle, and उसके अंदर completely उसके अंदर sharks and dolphins होनी चाहिए, right? ठीक है, अब क्या कोई ऐसी शार्क है जो डॉल्फिन भी होती है, या फिर कोई ऐसी डॉल्फिन है जो शार्क भी होती है? नहीं. So sharks and dolphins are separate entities, right? Shark is a type of fish, dolphin is another type of fish, and इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता. ठीक है, so dolphin and sharks के लिए जो सर्कल बनेंगे, they will be like this. All right, fine. So option A will be the answer of this question, right? Dolphins are mammals, not fish. एक बार जल्दी से गूगल कर लेते हैं. So are dolphins fishes? They are definitely mammals. Oh yes, so the meaning, absolutely. So let's go back on this. Good. So dolphins are not fishes. Dolphins are not fishes, right? Okay, so fish and dolphin. So this is the circle of fish and this is the circle of dolphin, right? And sharks will go inside fishes. So it should be like this for sharks. ठीक है, so fish के completely inside हो जाएगा sharks, and fishes and dolphins, they will have different circles. Okay, so correct answer will not be A correct answer नहीं होगा, the correct answer will be D. Okay, fine. नहीं नहीं यार, wider aspect they are fishes, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे विक्रांत. ठीक है, so we'll go with the literal things. Wider aspect as such कुछ होती चीज नहीं है. ठीक है, so if I'm talking about fishes, if I'm talking about sharks, if I'm talking about dolphins, so clear है कि डॉल्फिन्स मैमल्स होते हैं, फिशेस नहीं होती. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू. So come on, focus on the next question. All right, nice. C is the answer. Maximum number of students are saying this thing. Right. Now, milk giving animals, goat, cow, and hen. Okay. So, cows are milk giving animals. Goats are also milk giving animals. But are hens milk giving animals? No. ठीक है ना? So, milk giving animals के अंदर आ जाएंगी goat and cow, and hen will be outside. ठीक है, so you can eliminate this option, you can eliminate this option. दो option तो eliminate हो जाएंगे, right? Similarly, cow and goat, is there any goat which is cow or vice versa? No, cow and goat are separate entities. So cow का अलग circle होगा, goat का अलग circle होगा, and out of the 4 given options, the most appropriate option. अच्छा guys, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो वेन डायग्राम आपने ड्रॉ किया, that is not among the options. So in that case, you will have to select
द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो बार बार मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट? सो दिस इज समटाइम्स दिस मे हैपन विद यू इन द एग्जामिनेशन, ओके? सो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, ठीक है? यस आदित्य, हेन अंडे देती है, गुड, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, Abhay, you are asking, is this the same level that will be asked in IPMAT? So I would say yes, sort of. So अगर आपके माइंड में ये है ना कि IPMAT एग्जामिनेशन में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो माय डियर फ्रेंड ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? IPMAT एग्जामिनेशन में भी बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मीडियोकर लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं और हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आते हैं. बट इन द क्लासेस I always start with basic level questions. First of all, basic understanding, the logic, then basic level of questions, and slowly and gradually we increase the level of difficulty. Okay? All right. Now here, apple, golden apple, and fruits. So, which option is correct here? Yes, golden apples. So, apples ही हुए ना, right? Golden apple is a part of apple. So, ऐसा नहीं है कि कुछ golden apples apples नहीं है, नहीं. Every golden apple is an apple. Okay? Right? So, apple is a fruit. Yes. Golden apple is also a fruit. So, definitely there will be a bigger circle of fruit. Done? Now, all apples are fruits. So, if this is the circle of fruits, this will be the circle of apples. Okay? Right? Okay. So, answer क्या होगा? Come on. An answer? Option C. Why option C? Golden apple is a fruit. Golden apple is an apple. And all golden apples are apples. Right? So, golden apple will go strictly inside, completely inside the circle of apple. Okay? So, answer क्या हो जाएगा? Answer should be, the most appropriate answer here will be option A. Okay? Fine? No dimple, it's not E. आपने क्या किया है? गोल्डन एप्पल और एप्पल को पार्शली ओवरलैप कर दिया. So that means आप बोल रहे हो कि there are some golden apples which are not apples. नहीं, every golden apple is an apple. So if this is the circle of apple, golden apple should go completely inside. Okay, right? Apple and golden apple. Okay. There are some apples which are not golden apples, but every golden apple is an apple. So option A will be the correct answer. Right? Next question, all of you on your screen. Triangles, scalene triangles, and right-angled triangles. नाउ एक्सट्रीमली यूनिक स्पीशीज है या फिर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है ना, है तो एप्पल की ही स्पीशीज. सो दैट्स व्हाई ए. ऑल राइट, नाउ हियर मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन ई. ऑल राइट, ओके. नाउ एक तो चीज क्लियर है ना, that these two are types of triangles. So these two will go completely inside the circle of triangles. ठीक है? So in that case, I can eliminate these options. Option B, option C and option D eliminate कर सकते हैं because scalene triangles are types of triangles. Right angle triangles are also type of triangles. Are there any scalene triangles which are not triangles? No. Are there any right angle triangles which are not triangles? No. So all scalene triangles are triangles and all right angle triangles are triangles. अब बस मुझे देखना है
कि स्केलिन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रिलेशन हो सकता है. ओके, राइट. सो are scalene triangles and right angle triangles completely different, or is there any scalene triangle that can be right angle triangle or vice versa? Okay, so if I'll draw a right angled triangle like this which has unequal sides. Bhai, scalene triangle hota kya hai? Scalene triangle is a triangle in which all the three sides are unequal. ठीक है. Right angle triangle जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. So this example clearly gives me an idea about a right angle triangle which can also be a scalene triangle. But क्या सारे right angle triangle scalene होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है. ठीक है. So there are some right angle triangles which are scalene, right? And there are some scalene triangles which are right angle triangles. Okay. So the relation between scalene and right angle triangle will be they will partially overlap each other, and hence option E is the most appropriate answer. Okay, right? All right angle triangles are not scalene. ठीक है. सारे के सारे right angle triangles scalene नहीं होते, कुछ isosceles भी हो सकते हैं. ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल है 90 डिग्री, तो ये स्केलिन ट्राइंगल नहीं है. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. Okay, right? So that's why. So Harshit has given an example of an isosceles right angled triangle. All right. So option E is the most appropriate answer of this question. Let's move on. Next question. All right, let's move on. Words with no vowels, words with one vowel, and words with two vowels. अब कुछ ऐसे words हैं जिनमें vowel ही नहीं है. There are some words which have only one vowel. There are some words which have exactly two vowels. Okay, so only one vowel, no vowel, and one vowel. Common नहीं है ना? Different words हैं. Then one vowel and two vowels, again they are different words, right? So option D is the most appropriate answer. Why option C? Harshit, क्या कॉमन है? एक भी वॉवल नहीं है, exactly one vowel है, exactly two vowels हैं. So there is nothing common in those words which will have no vowel, which will have one vowel, which will have two vowels. यहाँ पे at least one vowel, at most one vowel, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, right? ठीक है. So exactly mention नहीं है निखिल. अब एक बात बताओ, words with one vowel, अब इसका मतलब क्या होगा? कितने vowel हैं इसमें? Words with one vowel, ठीक है, मैं आपकी बात बोल रहा हूं, exactly mention नहीं है. ठीक है, words with one vowel, अब इसका मतलब क्या होगा? उन words में कितने vowel हैं? एक ही तो vowel है ना. ठीक है. क्या words with two vowels जो है उनको मैं words with one vowel में इंक्लूड कर सकता हूं? नहीं. ठीक है. वर्ड्स विद वन वॉवल बोला हुआ है तो इसका मतलब वन ही है, इसका मतलब वन से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब वन से कम नहीं है. तो एग्जैक्टली लिखा है नहीं लिखा उससे क्या ही फर्क पड़ता है. ठीक है, सिंपल इंग्लिश. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो, समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन. ओके, हर्षिता, इंग्लिश गाइज, इंग्लिश नॉर्मल है यहां पे. ओके, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं. फाइन, आई एम राइटिंग अ वर्ड एंड टेल मी हाउ मेनी वॉवल्स दिस वर्ड हैज. ठीक है ना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ वॉवल बताने हैं. डन. ठीक है, FEEL, how many vowels are there in this word? Obviously there are two vowels, there is not one vowel. ठीक है ना.
I'm writing one more word. How many vowels are there in this? Again, there are two vowels. Can I say that there is one vowel in this? No, I cannot say that. Can I say that there are three vowels in this? No, I cannot say that. Right? So understand the basic meaning of English language, यार. ठीक है ना? Basic English language है ये. चलिए, next question. Words with no vowels, words with at least one vowel, words with at least two vowels. Okay. Now, words with no vowels and words with at least one vowel and at least two vowels, ये completely different होंगे. Completely different. तो एक ये वाला सर्कल तो अलग से बनेगा ही बनेगा, अलग से बनेगा. तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कैंसल्ड एंड ऑप्शन ई कैंसल्ड. दो ही ऑप्शन बचे हैं मेरे पास. ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैंने तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर ली. आई हैव एलिमिनेटेड थ्री ऑप्शंस. Now, word with at least one vowel, words with at least two vowels. Now, at least one vowel, how many vowels will be there? Either one or two, three, and so on. So, one or more vowels. Done? Words with at least two vowels will have minimum two, then three, four, and so on. Any number of vowels, two or more. So, can I say that all these words will include this, but all these words will not include this? So the circle of these two will be like this. Okay, clear? Fine. So words with at least one vowel will have all the words which will have one vowel, two vowels, three vowels, and so on up till infinity. Words with at least two vowels will have 2, 3, 4, 5, and so on up till infinity. Right? So all these words will include these, but vice versa is not true. So this is the type of circle, this is the type of Venn diagram that will be taken. Okay, fine. Got it? Great. चलिए, next question. बहुत easy question है. Yes, Ankur, IPMAT crash course अगर बैच ज्वाइन कर लेते हो, so it will be sufficient to crack IPMAT examination. ठीक है, जो भी हम amount of studies कर रहे हैं, but obviously this is a competitive examination. तो जितनी ज्यादा studies करोगे उतना better result आएगा. As far as your syllabus is concerned, yes, we'll be covering almost everything that will be a part of examination. ठीक है, universe, earth, Europe. Now, universe, it's a big thing. Universe के अंदर अर्थ आती है and अर्थ के अंदर यूरोप आता है. बहुत सिंपल सा वेन डायग्राम. ठीक है, so quickly give me an answer. Absolutely correct. I think nobody will make a mistake of this. Option B is correct. Okay, universe, earth and Europe. Right? चलिए, next question. Okay, there are some students who are asking me to give you a poll. Okay, guys, poll नहीं आज की क्लास में. ठीक है, हाँ, next class onwards I'll be giving you poll, because see,
Why I'm not giving you poll? Because I want to see यार कि who is giving which answer. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के लिए पोल देख लेते हैं. तो 30 seconds and you have 5 options. Okay, so the students who are watching this class on the application, they will be able to use this poll. ओके, जिसका पोल नहीं आ रहा वो अपने चैट बॉक्स में आंसर कर सकता है. फाइन. सो let's see what should be the answer, what should be the correct answer. Living beings, animals and men. Okay, so all animals are living beings, obviously. All men are living beings, obviously. So there will be a bigger circle of living beings, and inside this complete animals and complete men will be there. So option A is eliminated, option C is eliminated, D is eliminated. I'm left with 2 options. Okay, now animals and men are different. So men's are not animals, animals are not men. Fine. So ये दोनों completely different है, right? So option E is the most appropriate answer for this question. And let's see how many of you have marked option E. 56% students. That is disappointing यार. ठीक है, so please improve. थोड़ा सा ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को and then answer this. Okay, fine. No, Harshit. All humans are not animals. Animals अलग हैं, human beings अलग हैं. ठीक है? Okay, चलिए. Now people, let's move on towards the next type of questions. Okay, so you can have a look at this question. A complete Venn diagram is given to you. In the following diagram, rectangle represents authors, circle represents art critiques, triangle represents tattooists, and square represents joggers. Okay, now which set of letters or which regions represents joggers who are either art critics or authors? You have 5 options at the bottom of the screen. Okay, now you'll have to find out which region or which regions represents joggers who are either art critiques or authors. So first of all, joggers. Okay, so which figure represents joggers? Square, right? So I have these figures. So here I'll select this one. Okay, right? Joggers who are either art critiques. Now art critiques is circle, this one. So who are either art critiques or authors. Now authors का क्या था? Rectangle is this one, right? Okay, so I want all the joggers who are either art critiques or authors. So which of the answers is correct? Come on. So people are saying option A, BAH, all right. Any other answer? Option D, BH, all right. D cause nothing common, all right. A, fine.
चलिए, let's check it out. Now the debate, I believe it is under these two options, BH और BAH, मतलब A include होना चाहिए या फिर नहीं. Okay, now I want joggers who are either art critics or authors, right? Now you have a debate for A. The region represented by A is definitely joggers, but ये वाला जो region है, क्या ये आर्ट क्रिटिक्स या फिर ऑथर्स में से किसी भी एक में इंक्लूडेड है या फिर नहीं? आई वॉन्ट द जॉगर्स हु आर आइदर दिस और दिस. तो जॉगर तो होना ही चाहिए, एंड इन दोनों में से एक चीज, मिनिमम एक चीज होनी चाहिए. आइदर और का मतलब यही होता है, राइट? सो द पर्सन शुड बी अ जॉगर एंड देन इट शुड बी एटलीस्ट वन ऑफ आर्ट क्रिटिक और ऑथर. इन दोनों में से कोई भी एक चीज कम से कम होनी चाहिए. बट द प्रॉब्लम विद दिस रीजन ए डज नॉट कम्स अंडर द सर्कल. सर्कल में भी नहीं आता. सर्कल क्या था? आर्ट क्रिटिक्स. सो ए इज नॉट आर्ट क्रिटिक, ए इज नॉट एन ऑथर, राइट? फाइन. सो दैट्स व्हाई ए शुड नॉट बी इंक्लूडेड, एंड देन आंसर विल बी ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी will be the correct answer of this question. All right, so BH will be there. All right, are we good? अरे यार, ये जो फिगर है, आप एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर नहीं लग रहा. तो गाइज, अब इतना क्लियरली मैंने नहीं ड्रॉ किया. फाइन, थोड़ी सी गलती हो गई. आई एम रियली सॉरी. रेक्टेंगल क्लियरली पता चल रहा है, अदर वन इज अ सर्कल. अब पूरा हम मेजर तो नहीं करेंगे ना, तो जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरा वाला रेक्टेंगल क्लियरली दिख रहा है. ठीक है? ओके, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू. I'll give you a poll for this, and you have 45 seconds to answer this. Your time has started. You can see the poll at the top right hand side of your screen. So 3 lines होंगी, उन पे क्लिक करोगे तो आपका पोल आपको दिख जाएगा. So you all can write your answer in the poll. In the following figure, B represents businessmen, R rich men, H honest men. Which number will represent rich businessmen? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से फिनिश करो. All right, last few seconds, finalize your answer. Yes, this one is easy peasy. Okay, so which of these numbers represents rich businessman? So person should be rich as well as a businessman. So rich is R, that means the square or rectangle, jo bhi bolo. So it should be inside this figure. And B represents businessman, that means triangle. So the number which is in both triangle and rectangle should be considered. So answer should be option C, that is 2. Okay, so option C is the correct answer. Let's see how many of you have given. 77% have given the correct answer. Jaldi se next question pe chalte hain. Okay, a result of a survey of 1000 people with respect to their knowledge of Hindi, English and Sanskrit is given below. So H for Hindi, E for English and S for Sanskrit. What is the ratio of those who know all the 3 languages to those who don't know Sanskrit? Those who don't know Sanskrit. Be very, very careful about this. ओके धार्मिक, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है? राइट, डोंट वरी. बट थोड़ी बहुत इंग्लिश भी, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा तो बहुत स्लोली बोलने की कोशिश करूंगा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स.
Harshita, there is no controversy between humans and men's or animals, right? No controversy. आपको लग रहा है कि controversy है, but actually में कोई controversy नहीं है, वो clear है, right? Okay. So I'm giving you 30 seconds to mark your answer in the poll. So your 30 seconds have started now. Last few seconds. No problem, Yashraj. Chaliye, let's look at the answer of this. So we'll have to find the ratio of those who know all the three languages. So all the three languages, it is clearly visible. It is 100. Fine. So one of the numbers, the first number is 100. Second number is very important. Those who don't know Sanskrit, Okay. Now, to find out this number, do not just add. ये गलती मत करना. Do not just add the numbers which are written outside the circle of Sanskrit. ये नहीं करना. Okay? The survey is conducted for 1,000 persons. So total number of persons are 1,000. It may be possible that out of this 1,000, there may be some students. ऐसा हो सकता है कि इन 1,000 में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको संस्कृत, इंग्लिश एंड हिंदी, they don't know any of these languages. That means this number ये given नहीं है यहाँ पे, but ये कुछ ना कुछ नंबर तो हो सकता है ना, right? ठीक है. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, if you will add all these numbers, क्या इन सबका sum 1,000 बन रहा है? Let's check it out. So 200, 120 and 220, 500, 600, 700, 800, 950, 60, 70, 80, 90, 100. Yes, इन सब का sum 1,000 बन रहा है. ठीक है? Clear? So yes, we are getting a sum of 1,000. So now I can say that yes, this number, ये जो बाहर का number है, ये 0 होगा. Okay? And now the people who don't know Sanskrit will be 200 plus 120 plus 220. अब आप add कर सकते हो. But without finding this number, you should not be doing this. Or the best way of this is, ये वाला number तो 100 आ ही चुका है. People who don't know Sanskrit out of 1,000 people. So those who know Sanskrit, ये वाला number calculate कर लो and 1,000 में से इसको minus कर दो. There is no need to calculate this number. Okay? Fine. So 1,000 minus these three numbers, 100, 200, 300, 380 and 460. So 1,000 minus 460, that is 540, will be the second number. All right. अब आपको क्या करना है? 100 and 540 का रेशियो कैलकुलेट करना है, which is 5:27. Right? So I have taught you, I have told you, right, कि कहां पे मिस्टेक हो सकती है. Right? So please do not commit this mistake. Okay? Fine. चलिए. So correct answer is option A for this one. And 86% have given the correct answer. Nice, wonderful. Let's move on and look at the next question. The figure represents the number of people who take one or more
of tea, coffee and wine? Okay, study the figure carefully to answer the questions. So triangle is persons who take tea, circle persons who take coffee, and rectangle persons who take wine. So note down this. I'll be giving you the question. Okay, so question number 1 based on this set. So now this will be a set of questions. So there will be multiple questions that will be asked on this. Okay. So first question, how many persons take tea and wine but not coffee? How many people take tea and wine but not coffee? I'm giving you 30 seconds and your time has started. How many persons take tea and wine but not coffee? Kamal, Syahi, Pragati, Good, Ritik, Parv, Aditya. All right, nice people on YouTube. Good. How many persons take tea and wine? So पहले tea and wine. So that means triangle and rectangle. So triangle में भी होना चाहिए, rectangle में भी होना चाहिए. कौन कौन से numbers हैं? These are 17 and 15. These two numbers are the number of persons who take tea, which are in triangle, and wine, that means rectangle. Done. But not coffee. That means ये circle में नहीं होने चाहिए. So 15 will be removed because 15 is inside the circle and the only number that is there is 17. So 17, that is option A, is the correct answer of this question. Okay, right? So option A, 17 is the correct answer. Done. Let's move on and look at the next question. Question number 2. Again, I'm giving you 30 seconds. How many persons are there who take both tea and coffee but not wine? Tea and coffee but not wine. Departure as soon as will be able to complete the agenda. ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैं 7:30 तक पढ़ाऊंगा, 8 बजे तक पढ़ाऊंगा, 10 बजे तक पढ़ाऊंगा, नहीं. Questions जो है PPT में ये सारे cover up करने हैं. We'll have to look at every type of question. All right. So once the agenda is over, we'll stop for the day. So how many persons are there who take both tea and coffee but not wine? मतलब ट्राइंगल में होना चाहिए एंड सर्कल में भी होना चाहिए. ओके, बट रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए. सो इट शुड बी देयर इन ट्राइंगल एंड सर्कल. ट्राइंगल एंड सर्कल में ये वाले दो नंबर्स हैं 15 एंड 7. बट नॉट वाइन, दैट मीन्स रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए. सो आई रिमूव 15 and the answer will be 7. Okay, so option D is the correct answer and 95, almost 96% have given the correct. Okay, all right. Next question, question number 3. How many persons take wine? How many persons take wine? Quickly find out this number. I'm holding on. I'm not starting with the poll. So how many persons take wine? Okay, so the 30 seconds starts now.
परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अब करना क्या है, सिंपल। हाउ मेनी पर्सन्स टेक वाइन? सो इट्स ओनली वाइन दैट you'll have to look at it, which is this one rectangle. Okay, so everyone which is inside this rectangle will be a part of the answer. ठीक है ना? तो आपको सिर्फ एडिशन करने हैं ये वाले नंबर्स 20, 17, 15, 30 and 40. Just add these numbers and that will be the answer. So 70, 90, 110, 120, 122. So 122 is the sum of all these numbers that comes in the region of wine. Okay, rectangle में ये सारे numbers आ रहे हैं, इन सबको add करना है. Option C will be the correct answer. Almost 89% have given it correctly. Okay, so guys, not only independent questions but this type of questions may come from Venn diagrams which are in a set of 2 or 3 questions. Okay, now let's move on and look at one more set of questions. Okay, so this is what is given to us. The following figure, the trapezium represents dancers. So you are given यहाँ पे ये जो trapezium है, this is dancers. Circle is for singers. Sports persons is square, and this triangle is celebrities. Okay, right? So question number 1, are you all ready? Shall we look at first question? Yes or no? जल्दी से देखें. So yes, questions. Who among the following are either singers or dancers but not celebrities? Either singers or dancers, right? But not celebrities. Now the poll has started. Guys, there is small lag, right? 5 to 10 seconds lag between like on the application पे छोटा सा लैग है, ठीक है? तो इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एप्लीकेशन का लैग है. ओके, सो दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम. So who among the following are either singers or dancers but not celebrities? बहुत इजी क्वेश्चन है. Okay, now let's understand the meaning of either singers or dancers. Okay, either singer और dancer का मतलब क्या है? सिंगर और डांसर में से कम एक होना चाहिए. Okay, so anything that comes in the circle of singers and the portion of dancers will be included. Okay, everything. Okay, तो अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक होता तो आंसर क्या होता? Everything that is in the circle of in the region of singers and dancers, right? So singers में भी है, dancers में भी है, किसी भी एक में है तो भी चलेगा. So all the regions like A, G, B, F, C, right? So A, G, B, F, C ये सारे circles में है, and trapezium में और क्या क्या बचा है? D and E. So D and E, right? तो अगर सिर्फ क्वेश्चन होता that who among the following are either singers or dancers, so all these regions will be included. ये सारे के सारे regions include हो जाते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है बट नॉट सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए. तो दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है सेलिब्रिटीज का, जो भी इस ट्राइंगल में आ रहा है उसको रिमूव करना है. सो आई कैन सी दैट GBFC ये सारे ट्राइंगल में है. D is also there in the triangle. So I'll remove all of them which are under the region of celebrities. तो क्या आंसर बचा? ऑप्शन C, that is A and E. These two regions will be included. Okay, right? Clear? So either singers or dancers means at least one of them. ठीक है? At least one of them. सिंगर्स और डांसर्स में से कम एक होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं. ईदर और का मतलब ये होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
and maximum students have given correctly. Good, nice. Next question. Who among the following celebrities are singers but not sports persons? Careful. So your 30 seconds have started. All right. Now before we start with the discussion of this, एक बहुत important announcement जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी किया था आप लोगों के लिए. So from tomorrow onwards we are starting a new series of sessions on YouTube. Okay, YouTube पे एक new series शुरू हो रही है, that is called one shot series, right? And you can see us live on the YouTube channel IPMAT Wallah. Okay, with one session on verbal RC, quant and LRDI every week. Every week there will be one session. Now these sessions will be conducted on Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Okay, so these are the 3 days, Tuesdays, Thursdays and Saturdays. You can catch us live on IPMAT Wallah channel of YouTube with one shot series for IPMAT aspirants. Okay, question को discuss करते हैं. Who among the following celebrities? So celebrity, that means triangle में तो होना ही चाहिए, right? So it should be inside this triangle. Are singers. So celebrities which are singers, that means common between triangle and circle. So it is G, F, C and B. These four alphabets are common. ठीक है ना? So I'll remove this. Wait. Okay. So these four alphabets are common among the triangle and the circle, G, F, C, B. But ये sports person नहीं होने चाहिए. That means they should not be in the square. Square से बाहर होने चाहिए. So that means square में क्या क्या है? G and F. इन दोनों को remove कर देता हूँ because they are in the square. They were the sports persons. So answer क्या होना चाहिए? These two regions, B and C. So option A should be the correct answer of this question. All right, 72.8% have given the correct answer. Nice. Okay, let's move on. Look at the next question. Who among the following celebrities are neither dancers nor singers? Careful, guys, be careful about this. Neither dancers nor singers, celebrities. So who among the following celebrities are, so celebrity होना चाहिए but dancer singer में से कुछ भी नहीं होना चाहिए. Dimple, in the previous question, मैं अभी इस question को discuss करके I'll go back to the previous one, okay, right, and I'll explain you why I've selected that option. Okay, yes, inspiring words, it's a computer based exam. Yes, definitely, and you will get rough sheets. Okay, so rough work करने के लिए आपको space मिलेगा. All right. Following celebrities are neither dancers nor singers. So celebrity में triangle में होना चाहिए, but it should not be a dancer. So that means trapezium में नहीं आना चाहिए, nor singers, circle में भी नहीं आना चाहिए. Okay.
So any region which is inside the triangle but outside circle and trapezium. So it is region H and K. Okay. Now there are some students who may ask me कि भाई region H तो sports person है, sports person के बारे में कुछ बोला हुआ है? नहीं बोला हुआ. Okay. So whenever they are not mentioning anything about sports person, ignore that figure. So sports person वाला figure ignore कर दो. So अगर मैं इस square को यहां से remove कर दूंगा तो H will be inside the triangle but outside the circle and trapezium. Okay? So अगर sports person question में mention नहीं है तो sports person को ignore कर दो. Same thing you will do in the previous question. तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? HK, option D. So option D should be the correct answer. 94% have given it correctly. मैं एक बार previous question पे भी चला जाता हूँ जल्दी से. तो यहाँ पे C and B. So B and C, ये जो C है ये डांसर्स में है, बट क्वेश्चन में डांसर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, रेफरेंस है नहीं. तो डांसर वाला जो फिगर है इधर से उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो. ओके, राइट, परफेक्ट. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे फॉर ऑल ऑफ यू. Last question. Who among the following sportsmen are singers as well as dancers? Last question for the day. बहुत इजी क्वेश्चन है. Yes, so none of the above, ये आंसर मार्क नहीं करना है if you have an appropriate answer among the first 3 or 4 options. Now, Aditya, yes, this will be beneficial for you, but MHCT, महाराष्ट्र CT का जो BBA का एग्जाम होता है, we might not be covering the entire syllabus for that because there may be some things which may differ, but majority of the things are common. Okay. So which of the following sportsmen are singers as well as dancers? So sportsperson, sportsmen होने चाहिए, right? So they should be in this square. Square में होना चाहिए. Singers and dancers. Singers भी होने चाहिए, dancer भी होने चाहिए. So that means they should be in all the 3 figures: square, circle, and trapezium. So which alphabet is in all the 3 figures? F. F is the alphabet which is in all the 3 figures. Option B should be the answer. Okay. So option B. And 65 यहाँ पे थोड़े कम हो गए students. Option B is the complete answer. Okay, right? Great. So friends, that is all from my side for this class, right? I hope you would have enjoyed the lecture. The people who are watching me on YouTube as well, they would have enjoyed. One last time I'm repeating a small announcement. कल से one shot series start हो रही है. This is much awaited series. So do catch us live every Tuesday, Thursday and Saturdays live on the YouTube channel IPMAT Wallah with one shot series, right? So friends, that's all from my side for this day. Refer some books. ध्रुविक, बहुत सारी books है यार market में. कोई like I cannot comment upon the like which one is the best book. Okay, so what you can do is you can refer to a book which has the entire syllabus, chapter wise syllabus of all the topics of IPMAT, right? Okay, leaderboard. So yes, you can see the leaderboard. So 10 on 10, Adesh, Anushka, Da Vinci, Ashutosh, Mridul. So these are 10 on 10. Nice. Trisha, Vikrant, Dakshani, Ananta and Nitya. These are 9 on 10 and followed by the other students. All right. Okay. Sir, I have this guide for IPMAT but by Disha Publications. Yes. Aditya, कोई ऐसी बुक नहीं है जो खराब होती है, right? So all the books are good. हर एक बुक में आपको similar type of questions ही मिलेंगे, right? Every author, every publisher, or I'll talk about author only. Every author takes care of these facts that they include the questions which are covered in the previous year papers. Okay, so no worries at all. But before that, whatever material that we are providing you, this is very important.
So you will have to finish that material first of all and then look at any other book. All right. Okay. So friends, that's all from my side. Have a nice time. I'll see you in the next class. Bye-bye.